जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अब हम लोग पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर में माउथ था और लोअर में ये लंग्स हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंकाइस। ये है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। Lower respiratory tract में क्या आ जाएगा? The trachea and other passages of lower respiratory tract conduct air between the upper respiratory tract and the lungs. These passages form an inverted tree-like shape with repeated branching as they move deeper into the lungs. All told, there are an astonishing 1500 miles of airways conducting air through human respiratory tract. It is only in the lungs, however, that gas exchange occur between the air and bloodstream. Trachea क्या है? The trachea or windpipe is the widest passageway in respiratory tract. It is about 2.5 centimeter, which is 1 inch wide, and 10 to 15 centimeter, which is 4 to 6 inches long. It is formed by rings of cartilage, which make it relatively strong. The trachea connects the larynx to the lungs for the passage of air through the respiratory tract from mouth to the lungs. The trachea branches at the bottom to form two bronchial tubes, the bronchi and bronchioles. There are two main bronchial tube or bronchi and the singular called bronchus, called the right and left bronchi. ये है ब्रोंकाई, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और जो सिंगल है उसको ब्रोंकस बोलते हैं. द ब्रोंकाई कैरी ऑक्सीजन बिटवीन द ट्रेकिया एंड द लंग्स. ईच ब्रोंकस ब्रांचेस इनटू द स्मॉलर secondary bronchi and secondary bronchi branches into still smaller tertiary bronchi. The smallest bronchi branch into very small tubules called bronchioles. The tiniest bronchioles end in alveolar duct, which terminate in cluster of air sac called alveoli. Singular क्या है? Alveolus है in the lungs. जो singular है उसको alveolus बोलते हैं. The lungs, आगे आ गया lungs. The lungs are largest organs of respiratory tract. They are suspended within the pleural cavity of thorax. The lungs are surrounded by two thin membranes called pleura, which secrete a fluid that allow lungs to move freely within the pleural cavity. This is necessary so the lungs can expand and contract during breathing. These are called lobes and they are separated from each other by connective tissue. The right lung is larger and contains 3 lobes. The left lung is smaller and contains only 2 lobes. The smaller left lung allow room for the heart, which is just left to the of the center of the chest. ये देख सकते हैं आप लोग, राइट लंग है, ये स्मॉल है और इट क्रिएट स्पेस फ्री फॉर द हार्ट. इसमें 2 lobes होते हैं, इसमें 3 होते हैं. ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये आगे ब्रोंक्यूल्स में जो है फर्दर डिवाइड हो रहा है. ये ट्रेकिया है विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाइन पाइप और ये एयरवेज है. ये राइट लंग है, ये लेफ्ट है. आगे इसका जो है क्रॉस सेक्शन किया है वो मैं आपको बताती हूँ. ब्रोंकाई से ये आगे ब्रोंक्यूल्स है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पार्ट है ये ब्रोंक्यूल है, टाइनी एयरवेज है. ये इसमें न्यूरो एंडोक्राइन सेल है जो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट है. ये एल्विलाई है, ब्रोंक्यूल्स जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्विलाई. ये एयर सैक्स है, एल्विलाई को एयर सैक्स भी बोलते हैं. और ये इनमें जो स्पेसेस है इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, द स्पेस बिटवीन द एल्विलाई कैपिलरीज एंड एयरवेज. और
इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ये जो है सर्फेक्टेंट है विच इज द लिक्विड कोट द इनसाइड ऑफ द एल्वेलर। ये है पिक्चर ऑफ द नॉर्मल लंग और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्विलाई है, उसमें सेल्स एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट है और ये कैपिलरी नेटवर्क है जिसने एल्विलाई को सराउंड किया हुआ है। ये इसमें इंटरस्टिशियल स्पेसेस है और उसमें ये लिक्विड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड lung tissue consists mainly of alveoli. These tiny air sacs are a functional unit of the lungs where gas exchange takes place between the alveoli and the capillary network. The two lungs may contain as many as 700 million alveoli, providing a huge total surface area of gas exchange to take place. In fact, alveoli in the two lungs provide as much as surface area as half a tennis court. Each time you breathe in, the alveoli fill with air, making the lungs expand. Oxygen in the air inside the alveoli is absorbed by the blood in the mesh-like network of tiny capillaries that surround each alveolus. The blood in these capillaries also releases carbon dioxide into the air inside the alveoli. Each time you breathe out, air leaves the alveoli and rushes into the outside atmosphere, carrying the waste gases with it and also the carbon dioxide in it. ये है प्रोसेस, ये है ब्लड कैपिलरी, इसमें ये ब्लड पास आउट कर रहा है और ये एल्वियोलस है, इससे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में एंटर हो रही है और ब्लड कैपिलरी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलस में आ रही है और एल्वियोलस जो है वो बाहर से एनवायरनमेंट से फ्रेश एयर लेके आ रहा है विच इज हाई इन ऑक्सीजन एंड लोअर इन द कार्बन डाइऑक्साइड और ये ब्लड है विच हैज हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो ऑक्सीजन और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। अल्वियोलस से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में आ रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐसे ही एक्सहेल हो जाएगी बॉडी में से। आगे आ गया द लंग्स receive blood from two major sources. They receive deoxygenated blood from the heart. This blood absorbs oxygen in the lungs and carries it back to the heart to be pumped to the cell throughout the body. अब वो हार्ट में गया, हार्ट से ये throughout the body pump होगा. The lung also receive oxygenated blood from the heart that provide oxygen to the cell of lungs for cellular respiration. Protecting the respiratory system. You may be able to survive for weeks without food and for days without water, but you can't survive without oxygen for only a matter of minutes, except under exceptional circumstances. Therefore, protecting the respiratory system is vital. That's why making sure a patient has an open airway is the first step in treating any medical emergency. Fortunately, the respiratory system is well protected by rib cage of skeletal system. However, the extensive surface area of respiratory system is directly exposed to the outside world and all its potential danger is in inhaled air. Therefore, it should come as no surprise that respiratory system has a variety of ways to protect itself from harmful substances such as dust, pathogens in the air. The main way the respiratory system protects itself is called mucociliary escalator. From the nose through the bronchi, the respiratory tract is covered in the epithelium that contain mucus-secreting goblet cell. The mucus trap particles and pathogens in the incoming air. The epithelium of respiratory tract is also covered with tiny cell projection called cilia और जो इसका सिंगुलर है it is called cilium as shown in the figure. मैं अभी आपको फिगर दिखाती हूँ. The cilia constantly move in sweeping motion upward toward the throat, moving the mucus and trap particle and pathogens away from the lung towards the outside of the body. ये है pseudostratified ciliated columnar epithelium cells हैं. ये है ये सेल्स हैं, ठीक है, जो होल रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर किया हुआ है और इनमें ये सीलियास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं
और इन जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियाई होता है, साइटोप्लाज्म है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सीलिया है। कोई भी पार्टिकल आता है ये इसको ट्रैप कर लेते हैं और इसकी जो मूवमेंट है वो इस तरह होती है कि इसको लंग्स में जाने नहीं देते और आउटसाइड द बॉडी इसको मूव आउट करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए, the cilia constantly move in sweeping motion upward toward the throat, moving the mucus and trap particles and pathogen away from the lungs toward outside the of the body. ठीक है, अब क्या है, what happens to the material that move up the mucociliary escalator to the throat? It is generally removed from respiratory tract by clearing the throat or coughing. कोई भी पार्टिकल जब है वो आ गया है तो उसके साथ क्या होगा, उसने क्लियरिंग उसको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसने क्लियर ऑफ करना है by coughing or throat say. Coughing is largely involuntary response to the of respiratory system that occur when nerve lining the airway are irritated. The response causes air to be expelled forcefully from trachea, helping to remove mucus and any debris it contains, called phlegm, from the upper respiratory tract to the mouth. The phlegm may spit out expectorated or it may be swallowed or and destroyed by the stomach acid. ठीक है, आगे ये है स्नीजिंग है। स्नीजिंग में क्या होता है, स्नीजिंग इज सिमिलर क्या कफिंग और ये स्नीजिंग, ये दो इसके जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। कफिंग अभी मैंने आपको बताया, और स्नीजिंग में क्या होगा, स्नीजिंग इज अ सिमिलर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स that occur when the nerves lining the nasal passages are irritated. It results in forceful expulsion of air from mouth. This sprays millions of tiny droplets of mucus and other debris out of the mouth and into the air, as shown in the photo. ये देखें, ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कितने मिलियंस टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो निकल रहे हैं। दिस एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्नीज इनटू द स्लीव्स rather than the air to help prevent the transmission of respiratory pathogen. ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले मैंने आपको पढ़ाया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अब है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, आज हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।